Good evening everyone. Welcome to Unacademy. So guys, in this session I'm going to discuss slot 2 CAT 2019 quantitative ability. This is the part 2 of the session where I'll be covering half of the question, and question number 1 to 17 already done in the last session. So किसी ने अगर नहीं देखा होगा, so recommendation is go and watch that session also. So let's begin and practice the question from CAT 2019 slot 2. Okay, so hopefully everything is okay. Just let me check one. Yes, good to go. So let's begin. Before we start, let me quickly introduce myself. My name is Shyam Jagrut. I have been training the students for last 8 years for CAT and other MBA entrance exams. I have trained more than 7,000 students for MBA entrance exams, and I do teach the students for quantitative ability, logical reasoning, and data interpretation. So the agenda for today's session is, guys, to complete the remaining half, that is 17 questions of quantitative ability slot 2 CAT 2019. Those who are new to our channel, guys, quickly subscribe to this channel, that is Unacademy CAT for MBA. Share with your friends, and you can also join our telegram channel, that is CAT for MBA, where you'll be getting the PDF notes of each and every session that we conduct here on YouTube, as well as for the sessions we conduct on Unacademy Plus platform. So in case you haven't downloaded this app, so recommendation is, guys, you can attend all the special sessions totally free of cost. Just go and download this Unacademy learning app. Special sessions are completely free, and those who are willing to attend the plus courses and avail the features like mock test and the support for your preparation, you can also go for this plus subscriptions. Recommend to go for 1 or 2 year plan. You can also use this code SHAM1 to avail 10% of discount. Hi Vivek, good evening everyone. So let's begin, guys. Hopefully all of you are doing well. Try this. This is the question from geometry. So slot 2 analysis आज अपना complete हो जाएगा CAT 2019 का. The base of a regular pyramid is a square, and each of the other four sides is an equilateral triangle, length of each side being 20 centimeter. That's the side of an equilateral triangle. So definitely square का side जो square base है वो भी 20 by 20 का ही रहेगा. The vertical height of the pyramid is, think about it. Let me know in the comment section if you have any answer. Hopefully this is not a tough question for you. Really simple question, guys. Basics of geometry. Anyone knows how to solve it? The square pyramid. Actually need not to draw the diagram as such. You can just imagine and solve. Just to, if you don't have any idea, you can just look at this diagram and think about it. Something like this. Attempting, okay. Easy one, right? See if you can think about it.
Okay, first thing, what I can say, I want to calculate this height is perpendicular to this plane, and this is. So if this is 20, this is 20, this is 20, all the edges are 20, this must be 10. We'll call this triangle as PQR. So basically अगर तुम PQR की बात करोगे, so this is the triangle where this is PQ. This is not going to be a perpendicular, okay, because that's a tilted face. So ये 90 degree है, this is R, this is 10, this is height H, and let's say this is slant height L. Not slant height, I'll just call it as L. So basically ये जो triangle रहेगा, equilateral triangle, उसका height है. The height of equilateral triangle. What's the height of equilateral triangle? Do you remember the direct formula? This is going to be root 3 by 2 into 20. Anybody remembers this? Height of equilateral triangle. P, this is R. So Vivek had answered it as answer option A. So ये है A root 3, that is 10 root 3. ये आएगा, A का वैल्यू 20 है अपने पास. So this is 10 root 3. So definitely square this. This is 300. 100. This has to be under root of 200. Simple Pythagoras theorem. Under root of 200 is 10 root 2. That's right answer. Correct. तो क्या हमें यूज करना पड़ा यहाँ पे? हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड Pythagoras theorem. That's it. That's the simple way to solve this question. Let's move to the next. This one is a bit tricky, but if you are familiar with the logarithm and all, so बिल्कुल easy है. Try for this. If x is a real number, then the root over of log of 4x minus x square divided by 3 to the base e is a real number if and only if x lies between minus 3 to 3 or 1 to 2 or 1 to 3 or minus 1 to minus 1 to 3. क्या लग रहा है guys? क्या आंसर लग रहा है? Can you just tell me what is your approach to solve this question? I'm quite sure some of you must be using answer options to deal with such questions. Do you use answer options or do you have any method? और कुछ लोग ट्रायल एंड एरर करते हैं, रेंज में आंसर ऑप्शन से कुछ वैल्यूज लेके वैसे करना चाहिए. दैट इज ऑल्सो प्रॉपर मेथड टू डू. समटाइम्स that becomes easy, but not every time. It totally depends what exactly the function is. Anyone, any idea how to solve this? Guys, listen, the first thing that you should come to it should come to your mind is this square root. If this is a real number, for sure root over of negative number is not possible. That is not a real value. You will get to the imaginary numbers. So root over of positive numbers का स्क्वायर रूट लेते हैं तभी वो रूट मीन्स स्क्वायर रूट निकल सकता है. दैट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर विल बी real number if that number is positive. That's what the thing is, right? Vivek has answered it as answer option A. No, it was for the last question, I guess. Okay, so
दिस इज रियल नंबर, दैट सिंपली मीन्स ये जो रूट ओवर के अंदर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, या तो फिर जीरो होना चाहिए, जीरो भी चलेगा, दैट्स परफेक्टली फाइन। ये जीरो होता है तो रूट ओवर ऑफ जीरो इज जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज जीरो, राइट। तो जीरो भी चलेगा, या तो जीरो से ज्यादा, इक्वल या तो कम, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, लेस देन जीरो नहीं हो सकता है, दैट्स द सिंपल कॉमन सेंस यू नीड टू यूज हियर। रूट ओवर नंबर के रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज रियल नंबर, दैट सिंपली मीन्स जो भी नंबर होगा, जो भी वैल्यू रूट ओवर के अंदर आ रहा है, that has to be greater than or equal to 0. So I can simply write log of 4x minus x square to the base 3 is greater than or equal to 0. All of you with me? क्या है, सबको समझ में आया? रियल नंबर है तो डेफिनेटली जीरो या जीरो से ज्यादा होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकती है। देन आफ्टर दैट सिंपल, दिस इज नॉट 3, इट इज log to the base e, तो नेचुरल लॉग है, बट एनीवेज सो ई यहां पे ले लो, जीरो ऊपर जाएगा, कैन आई गेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर एज ई टू दी पावर, सॉरी डिवाइड बाई 3 भी है यहाँ पे, डिवाइड बाई 3 टू द बेस ई, डिवाइड बाई 3 must be equals to e to the power 0, simple law of logarithm. All of you understood that? Let me know in the comment section if you have any doubt. E to the power 0 is 1 and this should be greater than or equal to, so I got simple equation as 4x minus x square must be greater than or equal to 3. Hopefully you understood that. तो मैं x square इधर ले लेता हूँ, 4x भी उधर ले लेते हैं, सब कुछ उधर ले लेते हैं, यहाँ पे 0 बचेगा, 0 must be greater than or equal to x square minus 4x plus 3. So this value must be less than or equal to 0. ओके विवेक बोलो फिर आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। इसके रूट्स बताओ पहले तो मुझे, क्या है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आंसर ऑप्शन 3 आ रहा है तुम्हारा, ओके। -1 इंटू -3 दैट इज +3, राइट राइट, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, 1 और 3। अब जब तुम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर तुमने ग्राफ ड्रॉ किया ना गाइस, तो ये कट करेगा 1 पे और 3 पे, सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 3, और ऐसे एक पैराबोला हम ड्रॉ कर सकते हैं। So this is the graph which represent x square y is equal to x square minus 4x plus 3। तो ये 0, 1 पे 0 आएगा, 3 पे 0 आएगा, और 1 से लेके 3 के बीच में जो वैल्यू आएंगे, तब ये कर्व देखो ये नीचे जा रहा है, नीचे मतलब ये 0 से नीचे, y एक्सिस पे 0 से नीचे मतलब ये नेगेटिव वैल्यूज में जा रहा है। तो लेस देन और इक्वल टू 0 कहां पे रहेगा? 1 और 3 के बीच में कहीं पे भी, दैट इज आंसर ऑप्शन सी, दैट्स द राइट आंसर। होपफुली यू अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑफ पैराबोला, ये सबको समझना चाहिए। देखो y का वैल्यू ऊपर रह रहा है, मतलब x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है y, इस रीजन में y का वैल्यू नेगेटिव आएगा 1 से लेके 3 के बीच में, और 1 और 3 पे 0 आएगा, तो हमें लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए था, सो दैट इज बिटवीन 1 to 3, so this is the range including the endpoints. Let's move to the next one. This one was based on just basics of logarithm. Try for this. Let triangle ABC is a right angle triangle. I want you to try this question, simple common sense based question. उसके बाद कोई किसी को simple Pythagoras theorem भी आता है तो भी वो इस question को solve कर सकता है। Once you understand the situation, this is really easy question. Must solve. Try all of you.
Anyone who got the answer? And triangle ABC, the right angle triangle ABC. E and C, the hypotenuse of length 20, this is A, and if we draw a perpendicular from this is AP. तो AP का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अब पहली चीज तो ये 20 रख के तुम्हें ये दो साइड कुछ भी रखना अलाउड है, ये x है तो ये y है, x एंड y कैन बी एनीथिंग, व्हाटएवर द पॉसिबल वैल्यूज आर, वो कुछ भी रख सकते हो, बट AP का लेंथ मुझे मैक्सिमम चाहिए। AP मैक्सिमम कब होगा? Can you just give a common sense, apply one common sense simple thing, think about it logically, AP कब मैक्सिमम आएगा? कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में AP मैक्सिमम आएगा? That's what my question is. And hopefully all of you can answer me this. Vivek got the right answer, correct Vivek? क्या होना चाहिए गाइस? ये AP का वैल्यू मैक्सिमम तभी आएगा जब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, मतलब ये दोनों साइड सेम होंगे और ये 45 डिग्री होगा, तब ये AP का वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा आएगा। कैन यू जस्ट थिंक अबाउट दिस? इज इट राइट? सब लोग कन्विंस्ड है इससे? Otherwise we can have a different method also, but that is slightly lengthy, but ये तो बिल्कुल सिंपल था कि AP यहाँ पे जितना भी आएगा ये this has to be a maximum one. ओके, तो दोनों congruent triangle यहाँ पे बनने वाले हैं, तो ये 20 है तो डेफिनेटली ये मिड पॉइंट होगा, तभी ये हो सकता है। सो दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज गोइंग टू बी अ 45 डिग्री ट्रायंगल। इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड सेम होने वाले हैं। इधर मिड पॉइंट है, ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। योर आंसर इज 10। ऑल ऑफ यू ओके विद दिस? नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? दूसरा ऑप्शन है ये वाला, x² प्लस y² इज इक्वल टू 20, एंड फिर यहाँ पे तुम कुछ डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो AP and apply the Pythagoras theorem and get the value. That is also possible. But let's not get into that. This is the simple way to solve this question. So answer is 10. Let's move to the next one. Really easy question on geometry. Try for this. Again, I can say rather than of speed time distance question, I can simply say this is the question of simple common sense. जो most of the time CAT में तुम ऐसे questions बिल्कुल अपना reading carefully रखना है तुम्हें। Read it, interpret the question properly. If you are able to interpret it correctly, you'll definitely be able to solve. Doesn't need to have any concept of speed time distance. Basic चीजें सबको पता होता है guys. Speed is distance upon time. That's in that anybody can use that. Think about it. Anyways, यहाँ तो वैसे ही तुम टाइम कंपेयर कर लोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए. I won't be using even single formula for this question. Try for this 1 minute, and it should not take more than a minute to solve this such type of questions. A and B, they started from a single point, that is P. A moving clockwise, and B moving anti-clockwise. They meet for the first time at 10 AM when A has covered 60% of the track. Means definitely ये opposite होगा, 50% इधर कहीं होगा, 60%.
ए ने 60% ट्रैक खत्म कर दिया एंड बी ने सिर्फ उतने ही टाइम में बी ने 40% ट्रैक खत्म किया, right? And the time when they met for the first time is 10 o'clock. Now ए अपना यहां से कंटिन्यू करेगा, देखो इस पॉइंट पे मिलने के बाद ए अपना क्लॉकवाइज कंटिन्यू करेगा और बी अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो अपने अपने डायरेक्शंस में कंटिन्यू करेंगे। तो डेफिनेटली ए पहुंच जाएगा पहले क्योंकि वो फास्टर है और 40% ऑफ द ट्रैक जो बी ने कवर किया वो अभी ए को कवर करना है, जो ए ने कवर किया वो अभी बी को कवर करना है, राइट? एंड दे मीट at the they meet sorry they do not meet, A reached the point P, A को यहां से यहां आने के लिए 2 मिनट लगे, 2 मिनट नहीं सॉरी 10-12, so it took 12 minutes for A to reach this point. So at what time B reached point P? Anyone who can answer this? You can just compare these two persons, compare their times, and you can easily answer it. No one has answered. बोलो गाइस, किसी का नहीं आया? इट्स नॉट दैट टफ, इट इज मैक्सिमम। ये सिचुएशन एनालाइज होने के बाद हार्डली तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखो, 20 to 30 seconds मैक्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। एनीवन? विवेक, इट्स नॉट डी। बोलो गाइस, कोई और है जिसको आंसर आया? नहीं आया किसी को भी? सो लेट मी क्विकली टेल यू व्हाट इज द आंसर। सो नो, फर्स्ट थिंग, can you just tell me, A started from this point, let's call this point as Q to P आने के लिए 40% ट्रैक उसने 12 मिनट्स में ट्रैवल किया। तो फॉर श्योर कैन आई से अबाउट A, आई कैन से 40%, जो लास्ट 40% है, it took 12 minutes for A to cover that 40%, right? ओके, तो मुझे एक बात बताओ, उसको 40% के लिए 12 मिनट लग रहा है, तो तुम ये नहीं बता सकते हो जो स्टार्टिंग का 60% है उसको कितना टाइम लगा होगा? स्टार्टिंग 60% उसको कितने टाइम में उसने कवर किया होगा? हाउ मच टाइम फॉर 60%? तुम इसको मैन्युअली करोगे ना तो भी हो जाएगा। लेट्स नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। आई नो 40% के लिए 12 मिनट लगेंगे, तो 20% के लिए कितने मिनट लगने चाहिए? 6 मिनट लगने चाहिए। इन दोनों को ऐड करो, 40% और 20%, 12 और 6, यहाँ पे 18 मिनट्स लगना चाहिए ए को, राइट? सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू लुक एट द क्वेश्चन। It takes A and B started at the same time and it takes 18 minutes for A to cover this 60% of the track, and in the same time B ने सिर्फ 40% कवर किया। दोनों साथ में स्टार्ट हुए थे, मतलब B को 40% करने के लिए 18 मिनट ही टाइम लगा होगा। दोनों ने सेम टाइम स्टार्ट किया, दोनों मिल गए, तो ऑफ कोर्स इसने 80 मिनट ट्रैवल किया तो उसने भी 80 मिनट ट्रैवल किया होगा। सो सिंपली आई कैन कंक्लूड B कैन कवर 40% ऑफ द ट्रैक इन 18 मिनट्स, राइट? ऑल ऑफ यू कन्विंस्ड विद दिस? B को स्टार्टिंग के 40% के लिए 18 मिनट लगे और स्टार्टिंग के फर्स्ट 18 मिनट्स में A ने 60% किया, उतने ही टाइम में B ने 40% किया। दैट सिंपली मीन्स इट टेक्स 18 मिनट्स फॉर B टू कवर 40% ऑफ द ट्रैक।
अब बी यहाँ पे है, 10 बजे बी पॉइंट क्यू पे है, उसके सामने 60% ऑफ द ट्रैक बचा हुआ है, राइट? यस, राइट केदार, राइट विवेक, 60% ऑफ द ट्रैक बचा है, तो ऑफकोर्स 40% के लिए 18, 20% के लिए 9 मिनट, तो डेफिनेटली जो 60% ट्रैक बचा है उसके लिए 27 मिनट्स लगने चाहिए इसको, तो आंसर इज 10:27. We will be at the starting point and I don't find anything related to speed time distance in this. Guys, simple basic common sense use करके तुम इसको solve कर सकते थे. Yes, that's the real time because we already know यहाँ से उसको 27 minutes लगेंगे. Okay, the time right now is 27. That's really a big coincidence. Right. So it was 10:27. Let's move to the next. Try for this. I guess we had solved some question types similar to this in numbers as well. So see if we can solve this. This was a theta question, so no answer options. You need to tell me how many pairs are possible, how many pairs of the values are possible if m square plus 105 is equal to n square. तो काफी short questions है guys ये. If you look at the questions, look at the time it requires to solve this with the tricks, that's really short. You can quickly, you should pick such type of questions जो बिल्कुल time कम लेते हैं. Think about it again properly now. Last question was expected from your side. That was really simple comparison, percentage wise तुम्हें time compare करना था and answer देना था. यहाँ पे भी एक बहुत बेसिक फॉर्मूला जो सबको पता होगा वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं आइडेंटिटीज में से. ओके ना, राइट दिस. देखो ये क्वेश्चन अगर मैंने तुम्हें एक सिंगल स्टेप भी लिखा इसके बाद का, तो मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट एट योर ओन. लुक एट दिस, एम स्क्वायर प्लस, देखो अभी ये नंबर ट्रायल एंड एरर से तो मैं एम और एन के पॉजिटिव वैल्यूज तो नहीं रख सकता हूँ. तो व्हाट आई कैन डू हियर, अगर मैं ये m स्क्वायर उधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 105 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. एंड आई एम क्वाइट श्योर ऑल ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट नाउ. होपफुली यू कैन इजीली गेस फ्रॉम हियर. इफ नॉट, सबको फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a minus b. So this can be written as n plus m into n minus m. बस इतना ही काम था. Then हमें पता है n and m both are positive integers. तो surely ये multiplication जो है ये दो numbers का multiplication है. एक नंबर का वैल्यू है m plus 1 n plus m and दूसरा है n minus m. इफ n एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहला चीज गाइस देखो, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो n प्लस m बड़ा आएगा या n माइनस m बड़ा आएगा. डेफिनेटली समेशन ज्यादा होता है एंड डिफरेंस कम होता है. कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स लो, उनको ऐड, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, हमें ऑलरेडी पता है, राइट. सो हमें 105 105 को कितने डिफरेंट वेज में हम लिख सकते हैं. दिस मस्ट बी ग्रेटर, m प्लस n मस्ट बी ग्रेटर. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 105 इंटू 1, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 35, देन आई कैन राइट इट एज 5 इंटू 15, sorry, 5 into 21 and 7 into 15. In how many ways I can write this?
देयर आर 4 वेज टू राइट दिस। तो मुझे इसके साथ n और m के एक वैल्यूज मिलेंगे, इसके साथ भी एक वैल्यू मिलेगा, इसके साथ भी मिलेगा, इसके साथ भी मिलेगा। सो देयर आर 4 सॉल्यूशंस। इफ यू कैन ऐड दिस, दिस विल बी 38, 26। आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ m and n if you want, बट एज सच ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। So how many pairs are possible? There will be answer for this question is 4. How many of you understood it directly कि आंसर 4 है? जिनको ये समझ में नहीं आया कि m और n तो हमने निकाला ही नहीं। गाइस इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लो, m और n का वैल्यू मिलेगा। इफ यू टेक दिस कॉम्बिनेशन, यू विल टेक m plus n 105 and m minus n 1। तो मुझे दोनों इक्वेशन ऐड करने के बाद 2m का वैल्यू मिल जाएगा 106। तो m इज इक्वल टू 53 एंड n विल बी इक्वल टू 52। देखो 53 और 52 105 होगा और ये 1 होगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे वैल्यूज मिले, मुझे इसके साथ भी मिलेगा। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से वैल्यूज उल्टे लिख दिए हैं। m+1 ये 35 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, दिस मस्ट बी 21। एडिशन ज़्यादा होगा, 21 इंटू 5 एंड दिस इज 15 इंटू 7। डिफरेंस कम होगा हमेशा, राइट। सो सेम वे इसके साथ वैल्यू आएंगे। m इज 19 आएगा यहाँ पे और n आएगा 14, 19 एंड 16 सॉरी। इसके साथ m आएगा 13 एंड सॉरी m is big, anyways whatever the value comes, n is 13 and m will be 8, yeah it will be, this will be n। anyways let's not get into that। anyways हमें सिर्फ pairs, number of pairs ढूंढने थे, that is 4 pairs, that's already right and you need not to get into this what are the values and all, but with every pair it is possible to get the integer value of m and n। वो एक बार check करना चाहिए। if this addition comes even, definitely we'll get the value for m and n as an integer value। if the addition of this factor comes odd, then it won't be possible, so you need to just cross check that also, it may happen okay ऐसा कुछ हो। try for the next one। again easy question on ratio proportion। The salaries of Ramesh, Ganesh and Rajesh were in the ratio 6:5:7। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है गाइस, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शंस भी तुम्हारे पास है, you can easily try, less than a minute it should take if you do the proper calculations with proper values। Ramesh, Ganesh and Rajesh, the salaries are in the ratio 6 का 6x ले लो, इसका 7x सॉरी 5x and 7x। then in 2015 the ratio is 3:4:3। let's keep it aside। Ramesh's salary increased during this 2010 to 2015 by 25%। so what is 25% of 6x? 25% is 1.5x, right? 1/4। so I can take his salary as 7.5x। now listen, next thing, after the increase, इसका सैलरी भी इंक्रीज हुआ, इसका भी इंक्रीज हुआ, वी डोंट नो कि इनका सैलरी कितना हुआ, but after the increase the ratio it is given is 3:4:3। that simply means अगर फर्स्ट वैल्यू 3 है तो लास्ट वैल्यू भी 3 ही होगा। राजेश एंड रमेश, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो राजेश की सैलरी पे है, तो हमें ये बीच का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये 7.5x है, तो इसका न्यू सैलरी भी 7.5x ही होना चाहिए।
All of you understood that? Okay, so 7x का 7.5x हुआ, so increase of 0.5x compared to 7 into 100. X gets cancelled, 1 by 2 into 1 by 14 into 100. That's really simple thing. 14 sevens are 98 होता है, so close to 7%. Yes, that's right, Kedar. Really simple one on ratio proportion. Let's move to the next one. Try for this. This one is quite interesting and it will take time, definitely. So I'll give you some time to comprehend the question and try it. Try for 1.5 minutes, not more than that. By the time I'll explain few things if required. Okay, so let me tell you, a man makes a complete use of 405 cc, that is centimeter cube. Then this is 783. These are the volume of iron, aluminum and copper to make a number of solid right circular cylinder of each type of metal. So guys, the simple logic here is मुझे ये पूरा 405 आयरन यूज करके कुछ सिलेंडर्स बनाने हैं सेम डायमेंशंस के, जिनका रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट कुछ रहेगा h. So we know volume of right circular cylinder is pi r square into h. Right? So पहला चीज तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें कितने वॉल्यूम के सिलेंडर्स बनाने पड़ेंगे सो दैट ये मेटल जो है ये प्रॉपरली यूज होने चाहिए. दैट सिंपली मीन्स वॉल्यूम ऑफ volume of the cylinder must be SCF of 405, 783 and 351. So if you solve this 405, we can write this as 5 into 81 e 27. Then let's take 783 is also divisible by 3.
divided by 29. Okay, so 29 into 3. Then we have 351. Into 13. Okay, so if you take the SCF, that is 27, 27, 27. This is 27 into 15, 27 into 29. This is 27 into 30. That simply means the volume of this sphere must be 27. 27 is equal to pi into r square, which is 3 square, into h. The square is 9 into 3. So height is 3 divided by pi. Okay, and we are supposed to calculate the total number of cylinders is to be kept in the minimum. Then okay, so these are the minimum number of cylinders because we had take the SCF. Okay, after that then the total surface area of all these cylinder, surface area of cylinder is how many times, but 15 cylinders, 29 cylinders and 13 cylinders. So 15 plus 29 plus 13, that comes out to be 57 times. So I need to take 57 times of surface area of one cylinder. That is 57 times cylinder का surface area is 2 pi r in bracket h plus r. So this is 57 into 2 pi e into 3 pi divided by pi plus 3. So if you solve this, you'll get 57 into 6 pi into 3 plus 3 pi gets cancelled. 57 into 6, 7s are 42, 4, 34, 42 plus, can take common, bracket it is 1 plus pi. So I'm getting 1 plus pi, so this must be the answer. 342 into 3 अगर हम करेंगे, that comes out to be 102. Okay, so that's a bit tricky question. Let's move to the next. The quadratic equation x square plus bx the quadratic equation x square plus bx plus c has two roots 4a and 3a, where a is an integer
Which of the following is possible value of b square plus c? So first thing guys, we know if ax square plus bx plus c equals to 0, so alpha into beta product of the root is let me tell you if you don't know this part, just a minute. See, if alpha and beta are the roots, alpha and beta, so x into alpha and x in x minus beta must be equals to 0. If you solve this, x square minus alpha plus beta to x plus alpha, this is the equation we get, and if you divide this equation by a, you'll get x square plus b by a x plus c by a 0. So the root of sum of the roots alpha plus beta is always minus b by a, and the product of the roots alpha into beta is always c by a. That's what we can conclude, right? So if we apply here, sum of the roots 4a plus 3a, 4a plus 3a must be equal to minus b by a, must be equal to minus b. And the next thing, 4a into 3a, the multiplication of the roots must be equal to c. So this is an easy question if you look at this now, because b का value हमें मिल गया 7a, b is equal to minus b is equal to 7a. So if I do minus b square, will be 7a square, that is nothing but b square. B square will be 7a bracket square, that is 49. Then this is 12a square equal to c. So I am getting the value of b square plus c as 49a square plus 12a square, which is nothing but 61 into a square. So there must be a multiple of 61 present here in the answer option. So if we look at this values, 549, we divide it by 61 into 9. If we do 9 ones are 9, 9 6 are 50, multiple of 61, and that is 61 into 9, and 9 is nothing but 3 square, and these are integers, so a is an integer. That simply means, so that's the only possible value from the answer option is 549. That's quite simple to solve. Actual exam में तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत नहीं. You should be directly able to remember that alpha plus beta is minus b by a and alpha into beta is c by a. That is sum of the roots of quadratic equation and the product of the roots of the quadratic equation. Let's go for the next. This is the easiest question in the last CAT, that is CAT 2019 plot 2. देखो यहाँ पे एक 6 digit number दिया है. Go and read the instructions carefully. Just within 40-50 seconds you can answer this question. 6 digit number, the 6th digit, that is the rightmost digit, is the sum of the first 3 digits. Sum of the first 3 digits, that simply means this is a b c, so ये last digit a plus b plus c होना चाहिए, right? Then the next thing is 5th digit is the sum of the first 2. 5th digit is the sum of first 2, that is a plus b होना चाहिए.
right? Next thing, the third digit is equal to the first digit. The third digit is equal to first digit, मतलब यहाँ पे मुझे C लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे A ही लेना चाहिए. इंस्टेड ऑफ C मैं यहाँ पे भी A ले सकता हूँ. सो A plus B, 2A plus B, A plus B plus C करने से अच्छा, right? तो C का सच काम ही नहीं पड़ा because of this. Then the second digit is twice the first digit. Second is twice the first, मतलब B के जगह पे मैं twice of A लिख सकता हूँ. So instead of B, if I write 2A, this will be A plus 2A, which will be 3A. This will be 2A plus 2A, that will be 4A, right? And the next digit, the fourth digit, is sum of the fifth and sixth. Sum of the fifth and sixth. So 3A plus 4A, this has to be 7A. अब ये 7A है तो इंटीजर होने के लिए यहाँ पे 7 इंटू 2 करोगे तो तुम्हें 14 मिलेगा. These are the digits. Digits can be just between 0 to 9. 9 से ज्यादा नहीं हो सकता है तो 2 तो नहीं हो सकता है. 7 इंटू 1 उसको 7 ही होना पड़ेगा. So the maximum value this digit can take is 7 only. A को 1 होना पड़ेगा. So answer was this question was 7. As I already told you, this is the easiest question you can have in CAT. Really simple questions and no need of any concept again. The simple common sense. Let's move to the next. Track on this. Basics of percentage you require here. That's it. Let me know if you have any answer. Mukesh purchased 10 bicycles in 2017, all at the same price. All at the same price. Okay. He sold 6 of these at a profit of 25%. So let's say the cost price of a bicycle is 100x. Okay. For first bike, one bike. So he purchased 10 such. So cost price of 10 must be 1000x. Right? So all at the same price. Okay, so he sold 6 of these at a profit of 25%. Means kitna? 6 into 125x, 25% profit. 600 and 150, that comes out to be 750x. And the remaining 4 at 25% loss. 4 at 25% loss, that is 75x, which comes out to be 300x. So still he had some profit. Still he had the profit of the total he sold for 1050x. Still he's having a profit of 50. And 50x is given as 2000. इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता है. 50x is 2000. That simply means x has to be 40 and the total cost was 40,000 basically, but for one bicycle it will be just 4,000. So purchase price of a bicycle, single bicycle, that's 4,000. For 10 bicycles it is 40,000. Hopefully that's an easy for all of you.
Let's go for the next. Okay, so the number of common terms in two sequences. तो पहले तो कॉमन टर्म्स की बात हो रही है, तो हम पहले एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, ये 15 है, ये 14 है, ये 19 है, 19 है। पहला कॉमन टर्म तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कॉमन टर्म सीरीज अगर मैं यहाँ पे निकालू, कॉमन टर्म सीरीज क्या बनेगा? नाउ यहाँ पे हो रहा है +4, यहाँ पे हो रहा है +5। तो तुम 19 में 4 ऐड करो 5 टाइम्स एंड 19 में 5 ऐड करो 4 टाइम्स। That is LCM of 4 and 5 I'm talking about. LCM of 4 and 5 it's 20. तो नेक्स्ट कॉमन टर्म तुम्हें सीधे सीधे मिल जाएगा। ये 4 से बढ़ रहा है, ये 5 से बढ़ रहा है, तो तुम सीधा 5 और 4 का मल्टीपल 20 से बढ़ा दो। दैट्स द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5। तो 19, फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 19 + 20 दैट इज 39, which will be the common in both the series. The next number will be +20 again or 59 and so on, ये चलता रहेगा। तो लास्ट कॉमन नंबर किससे कम होना चाहिए? देखो ये 464 है, ये 415, तो 415 के क्लोज जाना चाहिए, राइट? तो वी नो इफ द फर्स्ट टर्म इज a, second term is a plus d, third term is a plus 2d, so the formula for nth term is a plus n minus 1 into d. Okay, so you can try for a number which is easy for us. ठीक है, अभी n का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, so let's say common terms इसमें कितने निकलते हैं? और पहला आंसर ऑप्शन 20 है। लेट्स चेक फॉर, अगर मैं T20th टर्म में ऐसे रैंडमली निकाल के देख रहा हूँ, तो बिकॉज आंसर ऑप्शन में कुछ भी रहता, मैंने 20 के लिए ट्राई करके देखना चाहिए। सारे आंसर्स 20 के आसपास है, तो हमें क्लियरली पता चलेगा 20 है या 20 से ज्यादा है। 20 से ज्यादा एक ही आंसर ऑप्शन है, 20 से कम है तो फिर 18 और 19 में से कुछ होगा, राइट? बट 20 इज रियली इजी वैल्यू टू पुट इन। So 20 minus 1, even you can put 21 if you want, or 20 minus 1 is 19 into difference is 20, तो ये आएगा 380 plus 19, 380 plus 19, it has to be 399, 399 आने के बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो 19 ऐड होने के बाद आएगा, दैट इज 418। सो ये आगे निकल जाएगा, इससे आगे तो नहीं हो सकता है, हैज टू बी लेस, सो डेफिनेटली ये 20 ही आंसर है। नेक्स्ट नंबर इज नॉट पॉसिबल। हैव यू अंडरस्टूड दिस? वाज दैट इजी क्वेश्चन टू डू? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, बट एज सच अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपली nth टर्म का फॉर्मूला भी पता है तो भी तुम निकाल सकते हो, और ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। तुम अपना सिंपल 20 ऐड करके ऐसे भी तुम सोचना चाहते हो, तुम वैसे भी कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला यू कैन डिराइव एट योर ओन इवन इफ यू डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बिकॉज दैट्स क्वाइट इजी टू रिमेंबर। फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड इज a plus d, थर्ड इज a plus 2d। अगर मैं फोर्थ टर्म पूछूंगा तो a plus 3d होगा। अगर मैं 100th टर्म पूछूंगा तो वो a plus 99d होगा। द सेम वे nth टर्म जो है वो a plus n-1d होगा। इवन इफ यू फॉरगेट, दैट्स नॉट अ बिग डील टू गेट दिस फॉर्मूला। Once you know the logic, you can easily get this formula for nth term of arithmetic progression. So simple question. So number of terms is 20. Last part, you can use the answer options to get this. Okay, मैंने 20 ट्राई किया which is close to 415, और फिर 20 ऐड करके तो फिर 415 क्रॉस हो जाएगा। so that means it has just 20 numbers. So let's move to the next one. It looks a tough question most of the time, students इसमें miss कर जाते हैं। This is the easiest question on series you can get. Think about it. Actually a question which you can finish within a minute, a really short question,
एक फॉर्मूला तो सबको पता होगा वैसे, 1 + 2 + 3 अप टू n। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज ऑल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला है, राइट? तो वो यहाँ पे यूज किया है, गेट दिस वन। बट द प्रॉब्लम इज सिंपली हमें n का वैल्यू अगर मिल जाए तो हमारा ये एडिशन हो गया, राइट? So how to get the value of n? I think you are one of the best. Thanks Vivek. Okay, so how to get the value of n? Now if you look at this, there is nothing, there is no multiplication in the series. The thing is just bracket डाल दिए, तो don't get confused with those bracket. Just remove those bracket. ये सिर्फ plus sign है everywhere, every term this is just plus sign between this. So multiplication की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? So if you want to add all numbers, तो पहले तो एक चीज देखते हैं, हमें नंबर्स कौन से ऐड करने हैं। 1 3 5 7 ऑड नंबर्स ऐड करने हैं टिल 47 तक। ओके 47 तक कितने ऑड नंबर्स होने चाहिए गाइस? देखो 1 से लेके 48 तक 24 ऑड नंबर्स हैं, 24 इवन नंबर्स है, तो 48 तो है नहीं अपने पास, बट 47 इज अ ऑड नंबर, सो देयर आर 24 ऑड नंबर्स बेसिकली, राइट? तो ये जो 2n 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 ये आया है, ये भी 24 टाइम्स आया होगा डेफिनेटली। 1 के साथ आया, 3 के साथ आया, 5 के साथ आया, राइट? 24 odd numbers and 24 times 2n plus 1 plus 3 plus 5 plus and so on till 47 तुम बोलो, या फिर ये नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं बोलूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है 24 टर्म्स। ओके बिकॉज मैं ये यूज करने वाला हूँ यहाँ पे 24 टर्म्स, बिकॉज द थिंग इज, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स का एडिशन का फॉर्मूला सबको याद है? नेचुरल नंबर का जैसे याद होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इन केस ऑफ कुछ लोगों को अगर ऑड नंबर का फॉर्मूला नहीं याद है ना गाइस, इट्स रियली रियली सिंपल फॉर्मूला। देखो 1 + 3 is 4, 1 + 3 plus let's take next odd number as 5, so 1 + 3 + 5 actually करके देखो, you can tell me the formula. So this is 9, 1 + 3 + 5 + 7 that comes out to be 16. so सबने ऑब्जर्व किया होगा, अगर मैं 2 टर्म लेता हूं तो ये 2 स्क्वायर आता है, अगर मैं 3 टर्म्स लेता हूं तो ये 3 स्क्वायर आता है, अगर मैं 4 टर्म्स लूंगा ये 4 स्क्वायर आएगा एडिशन। सिंपली 1 से लेके 47 तक तुम्हें एडिशन चाहिए ऑड नंबर्स का। what you should be doing, how many terms are there? There are 24 terms, so sum of these odd numbers, 24 odd numbers in sequence will be 24 square, and this total comes out to be 5280. so let's get to the calculation later. First of all, let's solve this. This is 24 into 2, and what we'll do, we'll try to divide it by 24 itself. Okay, so divide this complete equation by 24. what you'll be getting, 2n plus 24 equals to, इसको 24 से डिवाइड करो, ये बिल्कुल 24 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी होता है। so this has to be 24 2s are 48, 24 2s are 48, ये 20 आया, 220। so again divided by 2, complete equation को 2 से डिवाइड करो, n plus 12 has to be 110, let me just check once, 24 2 yes, right, answer is, final answer is 4851. yes, that's right answer. n का वैल्यू कितना मिल रहा है? 98, so final answer must be 98 into 99 divided by 2, 49 into 99,
So 49 into 99. That's 4900 से 49 कम आएगा. That is 4851. That's simple calculation, I guess. पहले 100 टाइम्स करो, 49 माइनस करो, that's it. 99 टाइम्स करना है तो 100 टाइम्स करके 49 माइनस, that's it. So that's correct. 4851 is the right answer, and hopefully this one is easy question. The only thing is ये odd numbers add करने का trick तुम्हें पहले से याद होना चाहिए. That's the formula simple that you can remember. And you should know the natural numbers का addition mostly पता होता है. बाकी तो ये easy था, and there was no multiplication here, so I can say this is the easiest question you can go for. Definitely within a minute होने वाला question. Few things if you know properly. Try for this. Yes, you find it easy, right? Okay. The strength of salt solution is P%. If 100 ml of the solution contains P grams of salt, that's really a straightforward thing, concentration. Then each of the three vessels ABC contains 500 ml solution. This question is just bit calculative, but as such इसमें कुछ भी tough नहीं है. 500 में 10% salt है, बाकी water है. So 500 ml of A, इसमें सॉल्ट एंड वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में क्लियरली लिख लेता हूं. यहाँ पे 10% है, 50 एंड 450. तो यहां से जब मैं 100 ml निकालूंगा, माइनस 100 ml जब हम यहां से करेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू इफ यू डू माइनस 100. तो दिस इज डिवाइड बाय 5. सो ये 10 ml जाएगा, ये 90 ml जाएगा. नाउ द left out will be 40 and 360. This is the 400 ml solution left. ओके, ये किस में ट्रांसफर किया? बी में. तो पहले चेक करते हैं बी में था क्या. सॉल्ट एंड वाटर, बी का कॉन्सेंट्रेशन है 22%. दैट सिंपली मीन्स 100 में 22, तो 500 में होगा 22%. दैट इज 22% ऑफ 500 इज 110 and 390. ओके, इसमें 10 लीटर्स आ गया और ये 90 लीटर्स आ गया. तो दिस कम्स 480 एंड दिस विल बी 120. ये हो गया 600 बिकॉज हमने यहाँ पे 500 ml था, उसमें 100 ml ऐड किया इधर से. राइट, सिंपल इजी थिंग. अब यहां से जब तुम 100 लीटर 100 ml माइनस करोगे ना, तो दिस इज 1/6. 1/6 कर दो सीधे इसका. -20 -80 एंड ये किस में शिफ्ट होगा? सी में. ओके, सो लास्ट वन स्टेप वी आर सपोज टू डू हियर. देन सी में चेक करते हैं. सॉल्ट इज 32%. 32 इंटू 5 दैट कम्स आउट टू बी 160 एंड वाटर हो जाएगा 340. Then if we add this 100 ml is added over here, तो ये हो गया 20 and 80. that comes out to be 420. this will be 180 in 600. now यहाँ से -100 जब मैं करूँगा, that is 1/6. 1/6 करो इसका, that comes out to be 30 -30 and -70. so इसमें this will be get added to this one, the first one. so +30 and +70, so that comes out to be 70 and 430 of 500. 100 ml is added.
last step. That's it. Done with this question. The strength of the percentage in the resulting solution of the vessel is 70 divided by 500 into 100. That comes out to be 70 divided by 5, which is 40%. Last answer option. Hopefully you understood this. This question was only for those who are good at ratio and they can use the multiples properly. If you do the कैलकुलेशन प्रॉपर्ली, मोस्टली इंटीजर कैलकुलेशन से ऐसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि बीच में कोई डेसिमल पॉइंट आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो नीड नॉट टू यूज एनी कैलकुलेटर्स इन दिस क्वेश्चन. पे कैलसी का काम भी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंट कैलकुलेशंस करने हैं तुम्हें. एंड बट कैलकुलेशन सारे मैन्युअली होने जैसे हैं. ऑल दीज आर मल्टीपल्स, तो यू कैन ईजिली मेक आउट क्या करना है. जस्ट फॉलो दिस प्रोसीजर, ऑल द वैल्यूज आर गिवन. Let's go for the next. Try for this. अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है. मीन्स अगर तुम मैनेज कर सको तो डेफिनेटली नॉट. 5 to the power x एंड 3 to the power y. सी कैलकुलेटिव तो ये भी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. बट इफ यू अंडरस्टैंड द मेथड एंड यू नो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा और तुम्हें पता है कि तुम कैलकुलेशन मैनेज कर लोगे, इतनी भी टफ नहीं है, थोड़े से बिगर है. दैट्स इट. so that's simple question. 5 to the power x minus 3 to the power y is equal to 13438. डेफिनेटली ये स्कूलिंग में तुमने इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के फंडे अलजेब्रा में यूज किए होंगे, जो मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ. लुक एट दिस. दिस इज 5 to the power x minus 1. so this can be written as 5 to the power x upon 5, and this can be written as 3 to the power y into 3. This is y plus 1. Okay, so 5 to the power x divided by 5 plus 3 to the power y into 3 is given as 9686. Hopefully you understood up till now and you don't have any query related to this. So इसके बाद में क्या करने वाला हूँ guys, देखो दो ही वेरिएबल है, दो लीनियर इक्वेशन जैसा डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाना चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज जो वेरिएबल है वो पावर में जा रहे हैं, राइट? दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट 5 to the power x as a and 3 to the power y as b. पहले a और b में लिख लो, तुम्हें खुद से समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या करना है. दिस इज a minus b is 13438 13,438. एंड यहां पे देखो a अपॉन 5 प्लस 3b will be equal to 9686. so looking at this, can you just tell me a and b तो मिल जाएंगे ना गाइस अपने को. सिंपल लीनियर इक्वेशन है. आई एम क्वाइट श्योर कि ये 13,000 है, इसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा एंड यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट, बट नॉट अ बिग डील टू गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट. एक बार वो मल्टीप्लीकेशन करोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन. x plus y is 13. yes, right Vivek, that's right answer. क्या करना था यहाँ पे, 3a minus 3b will be equal to 13,000 का 3 times is 39,000, 40,200, 400 is 40,000, 1200 and 39,000, 40,200 and 300. $39,000, 1200
120. ट्रायल एंड एरर से किया कैसे? ट्रायल एंड एरर से कैसे? दिस इज 40,314. Listen, this is 3 fifth का power 6th power near to 13480. Okay, that way you can do. Definitely that is possible, right? But anyways, look at this method. This is 40,000, this is 9,000, 49,700 और ये होता है total, ये होता है 50,000. That's not a big calculation actually. Just ये calculation तुम्हें करना था, triple करना था उसका. That's it. So this is 50,000 and फिर ये होगा minus और ये आ रहा है 3a plus a by 5, 3a plus a by 5, which comes out to be 15 plus 16, 16a divided by 5 is equal to 50,000. 50,000 में क्या होता है? 5 into 10 into 10 into 10 into 10. 16 मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये चारों भी 5 कैंसिल हो गए and a will be equal to 5 to the power 6. तो 5 to the power 6 is a, तो x का वैल्यू हो गया 6. द सेम वे जैसे मैंने ये कैलकुलेशन किया वैसे ही तुम्हें b का सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू, सो यू नीड टू डू इट दैट वे. b का वैल्यू तुम्हें मिलेगा 3 to the power 7 is b, so हमें y का वैल्यू मिल गया 7 and that simply comes, it is plus y, 6 plus 7, that is 30. Right, so once you start with this one is easy. This is I won't say this is tough question, really manageable one. Calculation भी तुम करते हो तो भी ये बिल्कुल doable question है, because we know कि guaranteed answer आएगा. पहले ही हमें पता है कि linear equation बनेंगे तो a और b का कुछ तो value मिलेगा and you can compare this, you'll get the value of x and y. That is definitely structured question, you can say, no trial and error at all. एंड उसमें तुम ट्रायल एंड एरर कर रहे हो पावर ऑफ 5 लेके, पावर ऑफ 3 लेके, तो डेफिनेटली फिर दैट विल अगेन हेल्प यू इफ यू रिमेंबर द पावर्स ऑफ द नंबर्स. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेट्स ट्राई फॉर दिस. Right, so you did it by trial and error. That's perfectly fine. Okay, a man invests ₹12,000 at 8% interest compounded annually. तो इस पे सीधा सीधा उसको कितना मिलेगा? 8% of 12,000. That is 960 rupees. A simple question on simple interest and compound interest. सिंपल इंटरेस्ट का तो थोड़ा सा पार्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिपेंडेंट है. ये एनुअली है, 1 ईयर के लिए दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये 960 हो गया 1 ईयर का. देन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, दैट इज हाफ ईयरली. हाफ ईयरली में क्या होता है? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है. दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. तो इन हाफ ईयरली सबसे पहले होगा 6 का हाफ, 3%, and 3% for 6 months. That's the only change, okay? And it's compound interest. So पहले क्या होगा? 10,000 इन्वेस्ट किया, 10,000 का 3% मिलेगा. 3% of 10,000, 6 month, it will be 300 rupees.
प्लस नेक्स्ट 6 मंथ अगेन 3% मिलेगा, 300 रुपीज। 300 रुपीज किस पे मिलेगा? प्रिंसिपल पे। बट ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा 3%, विच इज ₹9 एक्स्ट्रा। तो दूसरे साल 309 मिलेगा। सो दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट इन माई ओपिनियन, बिकॉज सिंपल 10,000 वैल्यू आया है, 6% वैल्यू है, 3% तुम दो बार कैलकुलेट कर सकते हो। प्रिंसिपल पे 2 बार सेम ही आएगा, जस्ट दूसरे साल जो होगा वो 9 एक्स्ट्रा आएगा, बिकॉज लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिला है उस पे इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो दिस वॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? 960 plus 609, that comes out to be 1569, and this is nothing but this is equal to the principal deposited at 7.5% per annum for 1 year, divide by 100. This is the simple interest, and this is equal to this 1569. Right, so what we can do here is the calculation part. We can write this as 4 times, that's 3 times. Oh, this will be 40 times. Okay, so I can divide it by 3 now. This 5 to, so 523 into 40, the principal. So 500 is 2000, or 2020 into 4 is 80, 2092. Right, so again an easy question, right? Hopefully it's easy. Those who understand this half yearly concept really well, उनको ऐसा कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली तुम 3% 2 बार तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं मैन्युअली, राइट? एंड दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year 960, that was in so easy, right? So you also find it easy. So last 2 questions, I guess 2 or 3 questions we are left out with. Last 2 questions and related to percentage and equation. That's it. No tricky question for today. So try karo thoda. This one, if you find this tricky, I don't know, but I won't say this is tricky. This is again a easy basic percentage question. You can try it. So ये भी easy लगा था, so last 2 भी almost easy लगेंगे. One big day. A shopkeeper sells 2 tables, each procured at cost rupees P to Amal and Asim at a profit of 20% and 20% respectively, at a loss of 20% and one at a profit of 20%. So as such there is no value here, कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो तुम सिंपली परसेंटेज, अगर ये सब पे एप्लीकेबल है तो 100 पे भी एप्लीकेबल होगा। शॉपकीपर सेल्स 2 टेबल्स ईच, दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है, इसका पी प्राइस है, ओके। तो आई विल टेक पी एज 100x इंस्टेड ऑफ पी, इसको 100x ले लो, पी क्यों लेना है तुम्हें, क्लियर? या फिर x और y उधर यूज हुए हैं, सो आई विल टेक p एज 100, दैट्स इट। So if it is true for p, then that must be true for 100 as well, because there is no actual value. All these values are in percentage. किसी को 100a वगैरह ऐसे लेना है तो भी कर सकते हो, तुम्हें नो नहीं चाहिए तो, बट इफ इवन इफ यू टेक 100, दैट्स राइट। तो अमल को कितने में मिलेगा एंड असीम को कितने में मिलेगा? दिस विल बी 120 प्रॉफिट, दिस विल बी 80, देन अमल सेल्स
या फिर एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक. इफ यू डोंट वांट टू गेट इनटू 100, सो पी लेते हैं. और पी को पहले 20% इंक्रीज किया, फिर अमल सेल्स टू बिमल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%. ओके, देन वापस 30% प्रॉफिट हुआ, एंड आफ्टर दैट फॉर असीम इट इज 20% लॉस, and Asim sells his table to Barun at a loss of 30%, then again decrease of 30%. Right? Have you understood this? The amounts paid by Bimal and Barun. Ita Amal, Asim. So Amal sell it to Bimal, Barun. होपफुली यू अंडरस्टूड दिस. मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है गाइस. दोनों के प्राइस पी था, तो पहले चेक करते हैं ये ट्रांजैक्शन. दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन एंड दिस इज द सेकंड ट्रांजैक्शन. यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो x रहेगा, यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगा वो y रहेगा. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इट इज p into 1.20 into 1.30. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. And just look at the third transaction. This is 0.80 into 0.70, 70%, 30% loss, तो बचेगा 70%. किसका? P का. This must be equal to y. If you solve this 12 into 13, I hope you can easily do it. 12 into 13, 156, and this will be 7 8s of 56, 0.56. so if you take x minus y upon p, x minus y upon p कितना होगा? 1p upon p. that is simple, answer is 1. इससे इजी कुछ हो सकता है क्या कैलकुलेशन? अंडरस्टूड दिस? अब किसी ने 100 लिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. 100 लेते हैं तो क्या होता, यहाँ पे 156 आता, यहाँ पे 56 आता, बट एनीवेज दैट हैज टू बी 1. राइट केदार. चलो वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ट्राई फॉर दिस. So here we end the slot 2 analysis of CAT 2019. So last 3 years के each and every question मैंने सारे last कुछ sessions में complete किए हैं. Solutions to CAT 2017, 18 and 19. All last 3 years questions are covered. Completely quantitative ability. Try for this last question for the day. John gets 57 per hour for regular work and 114 per hour for overtime. Then he works altogether 172 hours. His income from overtime was 15% of his income on the regular hours. Not more than 1 minute. ये खुद से तुम्हें आता है क्या? चेक करो. 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. Then for how many hours did he work overtime? कितने hours के लिए उसने overtime किया? Anyone who can answer this question quickly? Less than a minute. In less than a minute. देखो, कोई ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी कोई शॉर्टकट बिल्ड करने के बारे में मत सोचो. डोंट think too much. Just simply build the equation and complete it. It will just take 1 minute to solve this. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन बनेंगे. वी डोंट नो उसने कितना रेगुलर आवर्स है, कितना उसका ओवर टाइम है. सो सिंपल लीनियर, यू कैन गो बाय लीनियर इक्वेशन एंड फिनिश इट. होपफुली यू अंडरस्टूड. केदार, विवेक, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यू विल डेफिनेटली गेट द लीनियर इक्वेशन. टेक लेट्स अंडरस्टैंड उसने रेगुलर आवर्स x आवर्स है
एंड उसका ओवर टाइम आवर्स जो है वो y है, तो पहला मेरा इक्वेशन बनेगा x plus y has to be 172. Don't think too much. Clear? Then next equation, for x hours he get paid 57 rupees per hour. इससे easy क्या हो सकता है, 57x plus for this he get paid 114. For y hours, and this is his total income. Right? Hopefully you understood that. So we don't know what is total. हमें चाहिए ओवर टाइम आवर्स कितने थे, y का वैल्यू कितना है. हाउ टू सॉल्व दिस? One equation we know, that is overtime hours is the income from overtime hours is 114y. 114y is 15% of total. Any answer? How to solve this? 15% of total is 114. So this is 15% and this must be 85%. So oh sorry, it's 15, my mistake. It's 15% of regular hours, so 15% of 57x, right? Yes, right. So that was my mistake. It's not of total, this is of regular. 15% of his income from the regular hours, so definitely you'll get the ratio of x is to y. So as such we don't need this equation as such, you can just use this equation and get the ratio of x is to y. 114 will be equal to 15 by 100 into 57x, so that is just 2, double of 100, so that is 200 is to 15. X upon y will be equal to 200 upon 15. So what's the ratio? 40 to 3. Have you understood this ratio? Yes, right, Vivek. So what is your answer, final answer? फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? ये बात तो इजी है ना फिर. x is to y, अगर x 40 है तो y 3 है, टोटल हो रहा है 43. we know the total is 172. तो बेसिकली इसका 4 4 जा 16, 4 टाइम्स करना था, ये 160 हो जाएगा. इसका 4 टाइम्स करते हैं तो ये 12 हो जाएगा. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 आवर्स. Hopefully that's an easy question. Basically ये टोटल का कुछ काम ही नहीं था फिर. Need not to get into this. That's it. अगर वो 15% टोटल का होता तो तुम्हें थोड़ा सा और एफर्ट लगता,
बट ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। फिर 15% ऑफ द रेगुलर आवर्स का इनकम के बारे में है, तो फिर तो बिल्कुल रेशियो मिल जाएगा। एंड वी नो द x is to y total is 172 hours, so x is 160 and y is 12 hours, right? So done for the day, guys. If in case किसी ने Unacademy app डाउनलोड नहीं किया होगा, you can just go to Play Store and search for Unacademy learning app and let's join me there. So special sessions are completely free, you can make a use of that, and if you are willing to go for the plus subscription, don't forget to use this code Shyam1. Okay, quite easily done. Okay, so that's it for the day. So I'll be joining you tomorrow early in the morning also. टुमारो अगर किसी को पढ़ना है, कैलेंडर्स में पढ़ाने वाला हूँ मॉर्निंग 8 o'clock आई गेस, 8 जस्ट 2 hours का सेशन होगा। नॉट रियली इंपॉर्टेंट, मीन्स कैट प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर तुम्हें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स कुछ लॉजिकल चीज़ें सीखना है, कैलकुलेशन स्पीड करना है, डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन दैट। थैंक्स विवेक, होपफुल यू आर एंजॉइंग, दैट्स रियली ग्रेट। So tomorrow I'll be joining you in the morning and I'll be teaching calendars. So if you want to learn that, you can join me morning. And tomorrow I'll be having evening session as well and we'll be learning clocks. So मैं miscellaneous topics cover करूँगा tomorrow, then Monday को on Sunday also I'll be taking progressions, arithmetic progression, geometric progressions. ये कुछ topics है जो मैंने नहीं पढ़ाए थे. I was focusing on the more of हमने geometry, arithmetic and all complete किया था. So I'll be taking few miscellaneous topics from tomorrow, and for sure Sunday morning will be the logical reasoning session, marathon session on logical reasoning, you can say, must join. There will be many interesting sets day after tomorrow Sunday, but the session will be early in the morning again, 8 o'clock. That's it for the day, guys. Share with your friends. Do not forget to subscribe and press the bell icon so that you'll be notified about the sessions. And join us on CAT4MBA Telegram group to get the PDF notes of the session. That's it for the day. Good night.